कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीरीज माय टॉप पिक्स फॉर द प्लेसेस टू विजिट इन द मॉनसून सीजन। बरसात का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश और चाय और पकौड़े। ये याद आता है आपको बारिश से? वेल, किसका किसका ये फेवरेट मौसम है? सच बताओ मुझे कमेंट्स में, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम नॉट सच अ फैन। तो मैं हमेशा ढूंढती थी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ मॉनसून सीजन्स में, बिकॉज एज यू नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर आइदर नॉट रीचेबल और इट्स टू रिस्की टू गो। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं एक लिस्ट क्यूरेट करूं जिसमें मैं आप सबको अपने साथ ले चलूं उन डेस्टिनेशंस में जहां आप मॉनसून में जा सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो चलिए, और हमारा पहला डेस्टिनेशन है, यू गेस्ड इट, मसूरी। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मसूरी। तो इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी मसूरी की इन ब्यूटीफुल वादियों में। पर सबसे पहले बात करते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं मसूरी में और क्या खासियत है यहाँ पे। सो मैं रुकी हूँ द क्लाउड्स विंडसॉन्ग कॉटेज में, जो कि 10 किलोमीटर पहले है द मेन टाउन ऑफ मसूरी से। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इट्स अ 3 BHK हाउस कम्प्लीटली एज यू कैन सी, और 3 नाइस स्पेशियस बेडरूम्स हैं, डाइनिंग रूम है, फुल फ्लेज्ड किचन है। यहाँ पे आपको कुकिंग सर्विसेज भी मिलते हैं और और एक बेहतरीन व्यू ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे प्राइस में मिला। I'll put all the cost details here for you to know, and you can book it through Make My Trip or Airbnb, so do check them out. And the sunsets were so beautiful. And with the night came the bonfire. क्या मज़े आ रहे थे ठंडी हवा में और गरम गरम bonfire। ऐसे ही हाइकिंग के ऑप्शंस भी कुछ अवेलेबल हैं प्रॉपर्टी के आसपास, जहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि हम गए। लग रहा है। हाँ ट्रूली, हाँ। ये है हमारी सेना। हम निकले थे छोटी सी वॉक पे और ये सारे हमारे साथ। अब हमें किसी का डर नहीं है। वैसे तो यहाँ पे लेपर्ड्स होते हैं, बट अब तो हमें क्या ही डर है। कम What you doing? Come. Beautiful. What? इससे परफेक्ट हाइक तो हो ही नहीं सकती थी। गुड इवनिंग हो गई है, बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं बस गई थी एक छोटी सी हाइक पे एक्सप्लोर करने इस जगह को जहाँ पे मैं रह रही हूँ। शेरगढ़ी नाम है इसका। तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं हैं। द एरियाज़ एंड द हाईवेज़ आर क्वाइट सेक्लूडेड।
which is why it was all the more fun to walk on these roads. And not just this, you have a lot of other options to stay here. The बहुत सारे expensive options भी हैं, luxury. The charges can go up to 12,000 a night. अगर आपको मेन टाउन में रहना है तो आई विल सजेस्ट यू गो एंड स्टे नियर द लाइब्रेरी. दैट्स द एंटायर मेन सेंटर ऑफ द टाउन. वहाँ पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं. हाँ, बट हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगे. वेराइटी ऑफ कैफ़ेज आर अवेलेबल हियर. आपको हर तरह का कुजीन मिलेगा. यू लाइक इट? I will see you again in the morning tomorrow. Ciao. And we were all super excited for the next day because we were going to one of the oldest properties in Mussoorie, Hotel Savoy by ITC. This is one of the historic luxury hotels in the town and a must visit if you're in Mussoorie. This 5-star property has 75 classic rooms and offer you a breathtaking view of the Mussoorie hills as well as a lush garden. And with the fine dining experience, you can choose to live like a king or a queen for a day or two. वैसे the legend has it that this property is allegedly haunted. If that doesn't ignite your curiosity, then I don't know what will. And if you have time, I would definitely suggest to go to Landour, which is around 15 kilometers away from Mussoorie, to witness the most beautiful sunset. And last but not the least, the George Everest home and peak, जो कि हम explore करेंगे अपने next episode में. And this was my first solo hike experience and it was amazing. So कहीं मत जाइएगा. I hope you've liked this video. If you did, then please hit that like button. Subscribe to my channel. Help your girl grow. This is Neha, Aka Girl in the Mid, signing off. You keep traveling. Ciao.